I'll remind you again. The law can be both a help and a hindrance. Is there a new request from the academia? Hello guys, welcome to my stream. Welcome. हम आसमान में देख रहे हैं. Is there a new request from the academia? सारे दोस्त भेजे गए কি জানি how village Sometimes the law is compatible with human nature, but sometimes the two conflict. Balancing the two is a discipline in its own right. Hi, small fan here. Hello. Zedaro. Is there a Welcome new to my request from the stream. academia? आप इतने नाराज हो कि आप ठीक से बात ही नहीं करते हमसे ना. फील आता है अंदर से. कोई ना. ये टीपी बाहर दिखा रहा है लेकिन बाहर नहीं है. कमीशन से 1 2 बाकी सब 3 4 सब इधर उधर भाई. Hey. আমার ওয়ার্ল্ডে আসবি? বাউন্টি করব, আসবি? হ্যাঁ. हेलो. ये तो घर आ गए थे हम लोग. दादा. हाँ, खा लिए. अभी रोटी खाएंगे फिर. रोटी खाएंगे फिर. लंच आज कर ही नहीं पाए. काम नहीं, जहाँ खाते वहाँ गए, बोला खत्म, इसलिए नहीं खाता. खाली पेट में ब्रेड खरीदे थे. The case before फिर शाम को निकलने टाइम ब्रेड is खाए. फिर घर आके नहीं कुछ नहीं हुआ. क्रीम वाला ब्रेड खाए थे. फिर घर आके खाना खा लिया. क्या था? पका हुआ था, हम ये नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं, खा नहीं पाए. दाल भात था. दाल भात था. रखो. तुम्हारा खाना हुआ? ठीक है, खा लो, रेस्ट करो. कहाँ जाएंगे? कल है. नहीं, कल नहीं आएंगे. हमको अभी मन नहीं कर रहा. ठीक है, रखो. हाँ, वही तो, खाना खराब होते होते रह गया. अकेली हुआ नहीं. ठीक है, रखो. गुड नाइट. इनवाइट मी. आपको इनवाइट नहीं कर पाएंगे, हमको जाना होगा आपके वर्ल्ड में. हाँ. वर्ल्ड लेवल 8 হয়ে গেছে আমার. আমি 7 করে রেখেছি. আমি তো যেতে পারি. প্রিমো জেমসের জন্য.
ভাবলাম সার্ভাইভ করে নেব বলে অ্যাসেন্ড করে দিলাম 100 প্রিমোজেন্স দিয়ে দিল আমাকে তো জঙ্গলি আমার লাভড ওয়ান কি বলবো ওকে নিয়ে ডিপেন্ডেন্ট আছে আমার আর স্পাইরালে বেশ ভারে যায় আমি অনেক ইগনোর করি জানি আমি কত 3 বছর ধরে আমি ওকে ওকে ইগনোর করতে গেছি পরে পরে করব তুই ভালো প্লেয়ার তুই পালা পালা ভাই আছে লেকচার দিচ্ছে হ্যাঁ যেটা রোলের ওয়ার্ল্ডে ঢুকছি তুইও চলে আয় হরকে নেব হরকে নেব ওই হরো তোকে জেডা রোল্ডের ইয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি কি বলে হ্যাঁ দাঁড়া পাঠাচ্ছি তোকে तारा 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 नंबर किधर गया ये तो देख व्हाट्सएप पे पाठिয়েছি হরো Out of the frying pan, into the fire! Yay! Go back. Hi. Breakfast? Nice and spicy! अच्छा जेडा रोल्ड न्यू क्लॉक आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है प्लीज एक्सेप्ट कर लेना कर लीजिए हम लोग का हॉरो भाई हॉरो न्यू क्लॉक ये ना डिस्कॉर्ड है आसबो ठीक আছে ডিসকর্ড খুলছি দাঁড়া ठीक है जेडा रोल्ड आप डिस्कॉर्ड में आ जाइए मेरा हमार वॉइस चैनल आसबी I'll remind you again. The डिस्कॉर्ड law can be both a help and a hindrance. हेलो ও এর কাছে দেখ ডিলুক আছে Doing detective work means you gotta walk the walk. No, I mean literally. I need to ও search চলে high and এসেছে low for তুই আয় evidence. হ্যালো হ্যাঁ বল হ্যাঁ अच्छा हेलो आप सुन पा रहे हैं आपका आवाज क्यों नहीं आ रहा वेट सेटिंग अच्छा यहाँ सेट नहीं किया आ गया आ गया There's something in the air. लेकिन मैं सीन बंद तो आगे नहीं करना क्या इधर पे मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कोई नहीं, करूंगा हम क्या लोग हैं। यहाँ पे हम लोग कीर्तन हैं कोई नहीं कीर्तन करूंगा यहाँ पे हरे कृष्ण ये कौन है हरो भाई है ना हाँ हो रहा है हरो भाई हेलो किच्छु तो बॉल हरो हाराम ज्यादा मार सकते हो क्या मैं नहीं डैमेज नहीं होता है चलिए टीपी पॉइंट सब खोलेंगे टीपी चलेंगे करेंगे क्या आपका टेलीपोर्ट पॉइंट सब खोलेंगे वो किधर क्या होता है किधर हो आप गायब हो गया देखिए मैप खोल के देखिए स्प्रिंगवेल में हैं हम 11टा इधर हो आप किधर दिखेगा आप किधर हो नहीं दिख रहा देखिए ये ग्रीन तो- रंग का प्लेयर दिखाई
देगा नहीं ग्रीन। दिख रहा। मेरे को सिखाओ ना कैसे जाते हैं। आ रहा हूँ मैं, इनके पीछे मैप पीछे आ रहा हूँ। मैं इनके पीछे पीछे आ रहा हूँ। हुरू भाई के। हुरू भाई। हुरू भाई, ये इसको मारना है क्या? तो मार दो। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं तो फाइट कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। मेरे को मजा आ रहा है फाइट लेने में। তোরা ওখানে তোরা ওই টিপিটা খুলতে যাচ্ছিস? और मर नहीं रहा ये तो। দাঁড়া आ गया आ गया आ गया। আমি किधर जाना है? ক্যারেক্টার চেঞ্জ করি দাঁড়া। किधर गया? हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं हुरू भाई के पीछे हूँ। रुकिए मैं कैरेक्टर चेंज भाई करती हूँ। इनका स्पीड क्या है? भाई इनका गलत स्पीड है। ও হরো হরো রে হরো কি করছিস রে? भाई गलत स्पीड है इनका तो। भाई मेरे को लेके जाओ ना भाई। बच्चा है अपन। ये इनके सामने कोई कार्बन कॉपी कुछ समथिंग है, लाइक ऐसा कैमरा जैसे कुछ लगा हुआ है इनके सामने, ऐसा लग रहा है। ग्रीनिश कलर का। इसके ऊपर क्यों चल रहे हैं? आप टीपी के पास गए? अरे मेरे को बता दिया। कौन सा टीपी? किसका टोप? किसका टीपी? एक तो मतलब स्टैचू दिखेगा उसको खोलिए। ये जा रहे हैं ना, ये वो क्या बोलते हैं, हुरो भाई ऊपर कहीं पे तो लेके जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं हाँ किधर ऊपर लेके जा फिर रहे हैं। गिर गया। ये तो कुछ एक्टिव करके आ गया। थोड़ा थोड़ा आप करके क्या कर आइए। रहे हैं? अरे मैं आप भी आ गए। नाइस नाइस नाइस। मैं गिर जाऊंगा, मेरा एचपी नहीं है। रेड वाला जो है वो फ्री है। आप लोग अरे करिए, मैं इधर आराम करता हूँ। ठीक है, इधर लेट सकते क्या इसको? हाँ रेस्ट करके स्टैमिना ये करके आइए। आपको खोलना नहीं लेट होगा। सकते। ऐसा भी होता है क्या? हाँ ये टीपी Doing आपको detective खोलना work होगा, means you आपका gotta वर्ल्ड walk है the ना? walk. No, I mean literally. घंटे I का need to वर्ड search high लेंगे? and low for इतने सा? evidence. विजय में थोड़ी होता है। विजय में तो मैं ही क्लच करता हूँ। आप तो आपको मेहनत करने देता हूँ क्या? आप तो मेहनत करवा रहे हो मेरे को इस गेम में। ये गेम का रूल है, हम क्या करें? अरे एचपी बढ़ गया मेरा। ये आपका अभी क्या चेस्ट करना? चेस्ट चेस्ट ये नाइस। रॉ मीट नहीं खाता मैं पका हुआ मीट खाता हूँ। अरे गिर गया। চ হর লিড কর আমাদেরকে, কোথায় নিয়ে যাবি বল? हरो भाई का आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा मेरे को। ये बिल्कुल भी नहीं, 0% भी नहीं। আসছে না রে। मैं भी स्ट्रीम कर सकता हूँ यार, अगर ये ऐसा। इधर फाइट फाइट ले सकते हैं, इधर क्रीट पड़ा हुआ है। लेकिन फाइट किसके साथ लूँ? किधर किधर? यही तो हाँ। एक्चुअली ये आपको आग से उस चीज को जलाना है, जितना मुझे हाँ यही इस तो किस इस चीज को जलाना है। जलाइए इस चीज को इस इस चीज चीज को। को आग से। ये तो आगे है। अच्छा रुकिए, यही जला तो दिया। और भी है, रुकिए इधर। नहीं मेरे वर्ल्ड में मजा नहीं आ रहा। आप लोगों के वर्ल्ड पे नहीं आ सकता मैं? हम लोग का लेवल हाई है, नहीं घुस इधर पाएंगे। करेक्टर आ गया। इधर एक है। ओ रुकिए हम चेंज हट, करते हैं अगर टेंशन। हम कर पाते हैं देखो तो। आपके लिए मैंने, आपके साथ खेलने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। ऐसे बोलोगे तो खत्म है कहानी। हम समझ रहे हैं, क्यों नहीं खेलेंगे? मैंने वही बहुत मेहनत किया है। हाँ हाय चेस्ट, एक चेस्ट हाय। मिला मेरे को। मुझे पता नहीं क्या चीज मिला, लेकिन कुछ तो मिला। এই চেষ্টা খোলার हाँ জন্য इधर 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 है सामने। दिख गया दिख गया। ये बड़ा जला दे जला दे। और और किधर? देखो ऊपर एक चेस्ट है वहाँ। ऊपर किधर है? इधर एक चेस्ट है। मार्क नहीं होता क्या बीजीएमआई में? बीजीएमआई किधर है इसका? ये रहा, इधर इधर। यार, तो फायदा क्या है? आप लोग जो आए ना इस वर्ल्ड पे, इसका क्या फायदा है? आपको हेल्प करेंगे उठने में। जो फायदा कुछ तो है नहीं ना। लाइक नॉर्मल फायदा तो है नहीं। जैसे मैं आपको बीजीएमआई में हेल्प करता हूँ कि आपका रैंक पुश हो जाए, लाइक ठीक है। तो आपका क्या फायदा है? इस पे कुछ फायदा है क्या? आपका सामान चोरी कर सकते हैं। क्या क्या? इधर आप चोरी करेंगे? इधर इधर
इधर चोरी करवाता हूँ इधर। इधर भाग गया। चोरी करोगे मेरा सामान। अरे वो हम लोग को इधर मिलता है, अलग से इधर मैं मिलता है। वो मारूंगा, अल्टीमेट मारूंगा प्रो। इधर इधर अल्टीमेट मारूंगा मैं। अरे आग लग गया। चोरी करेंगे चोरी। दोनों भाई किधर गए? और वो भाई भाग गया, गए गए। वो भाग गया। আরে यार এইটা इधर বলছিস না কোথায় তুই? और किधर है? আমি नहीं তোকে ये तो আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? मैं भी नहीं दिख पा रहा उनको, मतलब मेरे को भी नहीं এর दिख रहा है। পিছনে এর পিছনে। इसके पीछे। ও আচ্ছা এই তো। আমি দেখতে পাচ্ছি না রে। इधर अरे है इसको ऊपर। ऑन करना है शायद, इसको ऑन करना है शायद। हाँ मिल गया, मेरे को मिल गया। আরে তুইও জ্বালাতে পারিস হলো। क्या? मैं क्या और क्या बोल रहा हूँ, मेरे को भी समझाओ ना। अरे ये जो बत्ती सब जला रहे हैं ना, हम लोग भी जला सकते हैं। ऐसा है क्या? आपका जलाओ चेस्ट ना। खुल गया है, आ जाइए ले लीजिए। ये सामने है क्या है? ये इसको ऑन करने जा रहा हूँ। नहीं हो गया है, ये तो ऑन है। और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, टट्टी टट्टी सब चीजें मिला, टट्टी सब चीजें मिला। ओ भाई शुरू शुरू में टट्टी लगता है सब कुछ। फायदा तो है नहीं। लेनो रिवान हेलो, वेलकम टू माय जाना किधर है? टीपी सब खोलना है आपको। वो जो ब्लू रंग का बत्ती दिख रहा है ये ये कपड़ा चेंज कर लिया। किसने ये कपड़ा चेंज कर लिया। किसने कपड़ा चेंज किया? मैं कहूँगा, मैं भी कपड़ा चेंज करेगा। अरे मैं भी आएगा। अरे मेरे को मारने का है ये, आपको मारने का, मेरे को खत्म करना है। मैं मार दे मेरे को। हम क्या अरे पंचौड़ है, किसी की हेल्प नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा टीपी खोल रहा है, टीपी टीपी। ये इनका करेक्टर क्या सेक्सी दिख रहा है रे, बहुत सेक्सी दिख रहा है। এই দেখ কি বলছে হয় যেটা রোল ধরো শুনতে बहुत পাচ্ছিস? सेक्सी है, मेरे को कैसे मिलेगा ऐसा? তুই কথা বলছিস না কেন? हम जा भाई एक शॉट में खत्म कर दिया। ओह, अबे और मैंने अल्टीमेट यूज कर दिया। और को तो मजा आ रहा है। तो जाना भाई, आजा। खत्म कर दिया मैं इधर पे, पूरा काफिला खत्म कर दिया। करना सबको खत्म मार दिया। अभी क्या करना है? আমি বেইডো ইউজ করব বেইডো। मैं बेइडो Retribution! एक शॉट में खत्म है भाई। आइस्टर है मेरे पास, आइस्टर है मेरे पास। हटो हटो, सामने नहीं आना, सामने नहीं आना मेरे और हुरो भाई के बीच में। इधर के गायब हो गए हुरो भाई, लेके इसको प्लीज। আরে নতুন নতুন আছে, বি ইজি অন ইউ। अरे मैं नया हूँ नया हूँ नया हूँ नया हूँ, सिखाना प्लीज। बीजीएम में कैरी करूंगा, इस पे कैरी कर लो। না আমি লাইভ Full on বলছি বে। করতে হ্যাঁ हाँ, नहीं। আমার ব্যাগটা দে, ব্যাগে भाई আছে। ये मैं कुछ मैसेज कर रहा, मेरे को समझ नहीं आया घंटे का। अरे ये लो, देखे दे। अब वो बात करते हैं। ऐसे मारूंगा ऐसे। मेरे पास भी मेरा करेक्टर स्विच नहीं हो रहा। ये देखो, मैं भी मारूंगा, मैं भी मारूंगा। आपका भी 5 स्टार है ना ये वाला करेक्टर? नहीं ये 4 स्टार है। शीश। लेकिन लेवल ज्यादा है शायद से इसका। हाँ चलिए चलिए। मेरा 40 ही है, ये वाला करेक्टर मेरा 40 ही है। आप टीपी कर पाएंगे ना? मेरे पीछे आइए। किधर है? कहाँ से आऊँ? टीपी टीपी। कहाँ पे करूँ? मैप टीपी क्या खोलिए। होता है? टेलीपोर्ट ना? हम्म, टेलीपोर्ट कहाँ पे करूँ? देखिए आप मैप खोलिए, आपको हाँ ग्रीन खोलिए। ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। हम ग्रीन
ग्रीन ग्रीन है देखिए। हाँ दिख गया। If you ever want to टू trade पी tactics, पे I'm टू always पी पे ready. है आप। मैं टेलीपोर्ट किस पे इस पे कर दूं? हाँ इस पे कर हाँ लिया, टेलीपोर्ट कर लिया मैं। आज ही स्प्रिंग वेल। कौन सा है ये? हाँ स्प्रिंग वैली आ गया आ गया आ गया। है हाँ किधर ये किधर? जाऊँ किधर? अरे आप दूसरा वाला टीपी है, हम दूसरा वाला, अच्छा इधर से चलिए, हम आ रहे हैं। इधर इधर सुअर है, सुअर को मार के आता हूँ। আরে টিপি গুলো খুলবো তো, তাই জন্য টিপি গুলো তাড়াতাড়ি খুলে দিই। मैं सुअर को मार के आ रहा। हाँ क्यों नहीं, अभी गायब हो गया ये। वो गायब हो जाता है तुरंत नहीं पकड़ पाने से। हम मछली चोरी कर रहे हैं। किसका मछली है? नहीं मेरा भी, आप ही कुछ होगी हमारी कीमत का। अपन अच्छे पकड़ लिए इंसान। दो ठो। इसको मारने का है रे मैंने। इधर तो आते मेरे को दिख क्यों नहीं रहे? आ जाइए आ जाइए। किधर गए? हाँ मेरे को भी मछली मिला। मछली कैसे कैच कर रहे हैं? एफ नहीं आपका हाँ स्क्रीन मिल में गया आएगा। मिल गया मिल गया मिल गया, एक मिला एक मिला एक मिला। पूरो भाई इधर ही है। हेलो। आ जाइए मारूंगा मैं। इधर इधर हेलो। हाँ रुक। हाँ भी किधर? इसको ऑन चलिए। करना है क्या? जा रहा हूँ। नहीं वो ऑन करने का नहीं, चैलेंज है। इसको ऑन करना है क्या? चैलेंज करना है क्या? कर सकते हैं लेकिन आपको करना होगा, ये फाइट वाला नहीं है। तो मैं इस नहीं करना मेरे को। अरे आप लोग इतना फास्ट क्यों भाग सकते हो? मेरा क्यों नहीं हो रहा? स्टैमिना नहीं है ना, स्टैमिना बढ़ाना होगा। फल चोरी कर लिए। चोरनी। गंदा हैबिट हो गया है। कुछ भी चीज दिखता है उठा लेते हैं। तो किधर जाना है? आप फॉलो कर रहे हैं ना? आप किधर है? हाँ आपको पिच्चू। भाई कैसे भागते भाई, सांड के जैसे भाई। ओ ये तो क्या हुआ है आपका? That's हाँ nice. खोल लिया मैंने। ओ यहाँ पर एक है। मेहनत किया हूँ मैं बहुत मेहनत किया हूँ मैं वैसे। किधर है? आप उसको ये गिर गया मैं। आप उसको लेंगे किधर है? कैसे? इधर। हेलो। उधर चढ़ना होगा शायद। आप ये एक भी कलेक्ट किए हैं? एनिमो पता नहीं पता नहीं। अच्छा छोड़िए। इधर है ना, इधर है सामने है ना। क्या चीज? जा रहा हूँ मैं इनको पेलने के लिए। चेस्ट। ओके। ओ भाई एक शॉट तक खत्म है भाई, एक बंदा खत्म हो। चेस्ट। ये डैमेज मार्क से क्या होता है? कुछ फायदा है क्या इसका? मतलब कोई? हम इतना इजीली जो मार पा रहे हैं ना, हाँ वही है और कुछ नहीं। यही गेम है मेरे को खेलने का नहीं, मेरे को अनइंस्टॉल करना है अभी। हो ऐसा गया। क्या हो गया? बोर हो गया? बोर तो नहीं, मेरे को तो एक साथ खेलना था बस, वही था। इसके वजह से इतना मेहनत किया मैं। हाँ तो एक साथ खेल रहे थे। हाँ जी। हम गायब हो गए। हाँ हम गायब हो गए। किधर? मैं ऊपर आ गया। आप किधर है? ऊपर। इधर हूँ मैं, ऊपर आपके ऊपर हूँ मैं। देखो हाँ चलिए चलिए। अपन टॉप में रहते हैं हमेशा। बीजेएम या जेंशिन। वो तो है। भाई एक शॉट में दो बंद गए, ये कैसे? भाई चीटिंग करके हैक ऑन करके आया भाई। हैक्स ऑन तो है। आइए मेरे पीछे पीछे आइए। टीपी सब घूमना है। टीपी टीपी। इससे टीपी ऑन करके क्या क्या फायदा क्या है इसको? आपका जर्नी इजी होगा। भाई
हो गए क्या? हाँ हो Yep, गए। और डन। इधर मैं खेल के आया इनको। एक और है इधर, लेट्स गो। इसको खेल कर भाई आप आओ ना भाई। आप तो ये आपका भी इच्छा तो खत्म हो जाएगा। निकलो Verdict is निकलो हटो। प्रीशियस चेस्ट में लगा। नाइस। अच्छा मैं 14 तक ही कर सकता हूँ अभी ना लेवल अप, तो अभी इसको इंक्रीज कैसे करना है इसको 40 से ऊपर कैसे लेके जाऊंगा? लाइक होता है क्या जैसे अभी पहले 16 में होता था हम्म। वो होता था, अभी ऐसा कोई है क्या? मतलब इस लेवल पे जाने के बाद ही होगा? हाँ, कुछ लिमिटेशंस है, आपको कैरेक्टर अपग्रेड करना होगा, स्टोरी करना होगा अपग्रेड करने के लिए। हाँ जी। अभी किधर जाना है? आप स्ट्रीम कर रहे हो ना हाँ, भाई? नोब के साथ स्ट्रीम। ऐसा ये क्या क्या है? है? स्मॉल लैम ग्रास ग्रास कुछ मिला है। ओह वाओ, इसको यहाँ क्या पर करना, ऑन करना है? ऑन कर दिया यहाँ इसको। और भी एक है। नहीं ऑन हो रहा है। वो आपका ई एबिलिटी से होता है। हाँ कर दिया मैंने तो। मेरे को मिस कर दिया मेरा एबिलिटी। चलो ये भी कर मेरा दिया, अभी क्या करना चेस्ट चेस्ट मिला, चेस्ट। है? कुछ नहीं मिला छुट्टी। अब जाना है ऊपर। बहुत ऊपर है। 11 बज गए क्या? पूरी स्ट्रीम में जाना होगा। 11:30 बजे स्ट्रीम पे जाऊंगा। ओके, आप स्ट्रीम स्टार्ट नहीं किए हैं? नहीं मेरा खाना सामने रखा हुआ है, मैं खाना भी नहीं खाया खेलने के लिए। अच्छा, खा लीजिए खा लीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपसे मारूंगा। ये मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है। ये क्या है? ये चीज क्या है? ये क्या है? वही तो, उठाइए। इलेक्ट्रो क्रिस्टल कुछ समथिंग है। हाँ, क्या है वो उठाइए। चीज? उससे क्या होता है? हमको भी नहीं पता, लेकिन बाद में काम आएगा। आप उठाए नहीं। ये बीस उठा लिया, एक उठा लिया। ठीक है, हम लूट लिए। लुटेरी मैं आ रहा हूँ, फॉर्म से रहा हूँ। बीजीएमआई होता तब दिखाता मैं लूटना किसको बोलते हैं। आ जाइए आ जाइए, ऊपर आइए। पहले चलूंगा मैं। हाँ ये हाँ, ये है। पहले पंजे। ये इधर है, और एक है इधर। क्या चीज? अरे अब मेरे को इतना टाइम तक तो मिला नहीं था ये वाले। बहुत ढूंढा लेकिन मिला तो मेरे को तो मिला नहीं है सर। फ्रेंड के हिसाब से होता है क्या ये चीज? हो सकता तो जब है। फ्रेंड आए तभी होता है। मैंने तो इतना ढूंढा मेरे को मिला ही नहीं। ये एक डोमेन है। ये 24 का है। चलिए डोमेन खोलते हैं। क्या मैं मार किला मारूंगा, खत्म करेगा। हट, खत्म। आ जाइए। जॉर्डन जॉर्डन। एक से शैडो, यो वेलकम टू माय स्ट्रीम। वेलकम। हेलो ब्रो, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं सीख रहा हूँ भाई, मेरे को सिखा रहे हैं। या अरे इलेक्ट्रिक पिस्टल से आई थी मेरे। ये कौन मार रहा है? वेलकम मचा दो। इसको कैसे उसको ऑन करना है मेरे को जितना लग रहा है। आपको ये, आपके पास एयर एयर वाला कैरेक्टर है ना? कौन हवा सा वाला कैरेक्टर। कैरेक्टर स्विच कैसे करूँ अभी? लाइक आ, अभी तो मेरे पास आपका मेन कैरेक्टर स्विच कैरेक्टर। नहीं हो रहा। पाइमॉन में जाइए, एस्केप मारिए। अरे मेरा लेवल अप हो रहा है, लेवल अप का क्या पता है। पाइमॉन में जाके पार्टी सेटअप।
नहीं पार्टिसिपेंट है मेरा, ये वाला है, लेकिन इसको स्विच नहीं हो रहा मेरा करेक्टर। लाइक होगा। मेरे को सिर्फ आपका दिखा रहा है, और होरोको बाइक के दिखा रहा है, और वो ये वाला करेक्टर और शाइनिंग का करेक्टर दिखा रहा है, बस खत्म है। हाँ, शैंगलिंग को या दीलू को किसी एक जन को क्लिक कीजिए। पार्टी सेटअप पे जाके If you ever want to trade tactics, I'm always ready. आपका जो 2 कैरेक्टर है उसमें से एक ठो को सेलेक्ट कीजिए, आपको दिखा देगा। हुआ क्या? हाँ हो गया। अब इसको क्या करना है? ये अभी तक खुला नहीं है, उसको मारना होगा। हाँ ये तो खत्म भाई, ऐसा पावर ये खोल क्यों नहीं रहा? अच्छा सील ये खुला ना। हाँ? अरे ये ऊपर से इधर से करना होगा, चढ़ के करना होगा। इधर ऊपर। अरे यहाँ से जंप करके मेरा हो ही नहीं रहा। उधर से नहीं, पीछे से आइए। It's a shadow. Been a long time since last time I was here. You need to find silly. मैं जंप करता भाई, मैंने फेल दिया। Let's go find some treasure. For now, I'm just helping a friend. A sweet friend of mine. अभी यहाँ पे जंप करना है कैसे, सीधा ना? अरे मेरे को फेल दिया। अरे जंप करके पंख खोल लीजिएगा। कुत्ता बना के मारना। ये स्वेल क्या होता है? अरे फिर से फुटबॉल बना दिया। जंप करके अरे फिर से फुटबॉल बना दिया। ऊपर आइए। अरे फुटबॉल बना दिया। किधर है आप? इधर नीचे। ऊपर आइए। जंप करके पंख खोल लीजिएगा, उसके बाद कर लिया मैं पंख। वो देखो, ये देखो फुटबॉल बना दिया मेरे को ऊपर। और ऊपर उठना होगा आई गेस। इधर उठ जाइए तो। और इधर। इधर और ऊपर चलो। कर लिया अभी। हाँ ये गॉड कर ले स्पॉट अभी। ये तो सीली को फॉलो कीजिए। एक सीली इधर, एक सीली है। पता नहीं मैंने क्या किया, लेकिन कुछ तो किया। एक तो ये आत्मा लोग को लेके जाइए। इधर आइए। आत्मा इसका आत्मा है। पता नहीं। ये भाई लेके जाना भाई। एक और सीली है, किधर है? Windblade. कर दिया अभी। एक और लास्ट सीली है यहाँ। खोजना होगा। इसको नहीं ऑन किया, वो ऑन नहीं होगा अभी। No one's joined me on an adventure in ages. Come on. रेड Go. होके रखा है। सीली पीली नहीं हो रहा ये। अभी नहीं होगा, एक और सीली बाकी है। ये तो ये एक स्पॉट खाली है। इसको ही ट्राई कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा ये। और सीली भाई। है কি বেরোবো? হ্যাঁ ডিসকর্ডে আছি। এখানে गुस्सा करने वाले में आया क्या? হ্যালো হরো কিছু বল। Weather's not bad today. Oh crud! I jinxed it. Ow! আমি গেমের আওয়াজ শুনতে পেলাম। Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. আমি তোর সাউন্ড বাড়াচ্ছি, গেমের সাউন্ড আসছে। It's hard to remain on আমার dry কান land for so long. Never আমার quite seem to কান। get my land legs back. हरो भाई कोशिश कर रहे हैं बात करने का, उनका माइक नहीं चल रहा।
वेलकम टू द failed स्ट्रीम। successfully. एक shadow, I don't think you remember me, lol. I do remember you, एक shadow. आप आते थे, आई थिंक मुझे याद है. अरे भाई मेरे से ये समझाओ ना ए किधर से यहाँ क्या यहाँ यहाँ मिल गया. किधर इधर खोपचे में. किधर आ जी. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. ऐसी तो मार्क कर रहा मैं इसका अभी हुआ इसको एक्टिव करना है क्या ये मैं जॉड हो गया भाई खुला. खुला खुला कुछ तो खुला है लेकिन पता नहीं क्या है खुला डोमेन. ये क्या है We've come to those who गार्डन खुला है that's what they say. एक सेकंड रुकिए तो मैं आई. मैच करना है क्या इसको नहीं अभी मत कीजिए. आपको मन है ओके मैं नहीं किया कुछ नहीं किया मैं कुछ नहीं किया मैं अब जाके दूसरा कुछ खोलते हैं. Please, adventure name. Temple. চাচ্ছিরে এক সেকেন্ড রুকিয়ে. না আমি ওর সাউন্ড বাড়াচ্ছি ওর গেমের সাউন্ড আসছে. Verdict is দাঁড়া আমি Let's go find some treasure. Ow! Where did that come from? If you ever want to trade tactics, I'm always ready. ওর গেমের সাউন্ড আসছে ওর সাউন্ড আসছে. हेलो हाँ बोलिए बोलिए सॉरी हॉरो भाई कोशिश कर रहे थे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है उनका. It's hard to remain on dry land for so long. तो फिर एक काम Seem to करता हूँ get my land legs back. Adventure team. आज आप लोग खेलने के लिए नॉर्मल सा अब बनो और मैं अभी थोड़ी देर के बाद खाना खाके मैं भी स्ट्रीम में जा रहा हूँ 11 बजे ना तो ठीक है. मेरे को उनके साथ खेलना था ऐसे ये क्या कर रहे हैं लेकिन इनका करेक्टर बहुत सेक्सी है ये करेक्टर कैसे मिलेगा मेरे को अभी मिल रहा है आप विश कर सकते हैं. मेरे पास भी है मेरे पास 5 स्टार है आपके पास 4 स्टार है हाँ हाँ ये देखिए ये 40 का होगा लेवल 40 का होगा फिर भी बहुत पेलूंगा मैं हाँ बहुत पेलूंगा मैं भाई ये कैसे ये कैसे हॉरर फ्लेक्स कर रहा है हॉरर फ्लेक्स कर रहा है. टेक्स्ट कर रहे हैं ना ये समझ में आ गया मेरे को फ्लेक्सिंग. हाँ भाई ये स्प्रिंग रुको मैं दिखाता हूँ एक सेकंड ये कौन सा वाला करेक्टर है मेरे पास मेरे पास फ्लेक्स करने के लिए बस ये बूढ़ा आदमी है. ये ना ये कौन सा वाला करेक्टर है ये गॉड है गॉड सबसे ओल्ड कैरेक्टर है ये 6000 कौन इयर्स सा ओल्ड कौन सा वाला है. भाई आपस में फाइट ये मेरे पास ये करेक्टर है
अरे मैं करेक्टर कैसे सोच रहा हूँ? अरे मैं दिखा रहा हूँ, वो वाला आपका फेवरेट वाला करेक्टर। रुको रुको, मिंगवान कैसे स्विच करते हैं? हाँ हो पार्टी गया। सेटअप। हाँ हाँ, ये देखो मैं करता हूँ, निंग फ्लेक्स। निंग अबे निंग किधर गया? निंग मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। हेलो, एक शैडो। ओ ये तो पूरा फ्लेक्स मोड पे आ गई ये तो। मेरे पास यही फ्लेक्स करने का है, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए अब। ये क्या कोई किसी के पास ये है क्या? बताओ बताओ, है क्या? नहीं, डिलूट नहीं दिखाओ है। मेरे को। हाँ, हो गया ना, खत्म। चलो ठीक है, मैं आता हूँ बाद में, आप लोग खेलो ठीक है। ठीक है, बाय मैं खाना बाय। मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ खाना खा रहा हूँ, मैं इसको स्ट्रीम पे चालू करना है। चलो Stand clear. बाय बाय, टेक केयर Bye एंड bye. थैंक यू सो मच मेरे इतनी हेल्प करने के लिए। एनी टाइम। बाय बाय। थैंक यू भाई, बाय बाय। बाय। তোর ওয়ার্ল্ডে আয়, ডিসকর্ড থেকে বেরো। তোর ডিসকর্ডটা কি হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারছি না। আমি সাউন্ড বাড়িয়েছি, তোর গেমের সাউন্ড আসছে। হালত খারাপ হয়ে গেল আমার। চল এলানের বস করি। কিসের ইভেন্ট আছে? কিসের ইভেন্ট? এইটা? ও এটা কি? 4 স্টার। এটা কি? এটা কি সাইডে ঝুলবে নাকি আমার? কোথায়? না না, আমি ঠিক এক্সপ্লোর করে নেব। হ্যাঁ, স্টোরি শেষ করতে টাইম লাগবে। Hey, doesn't Mondstadt celebrate the Windbloom Festival around this time of year? Paimon has lots of good memories from the last one. The sweet scent of flowers on the breeze, the sweet smell of tasty snacks on the breeze, the feeling of the breeze on your face? The only downside was the lack of commissions. But Paimon's sure that was just a one-time thing. There's gotta be someone who needs our help, right? Let's go see how things are this year. ওকে, লেটস গো। নেভিগেট। जो भी होगा मॉन्स्टैड में। लेट्स गो। তুই কি কমপ্লিট করে নিয়েছিস নাকি? অনেক লম্বা কোয়েস্ট না ছোট? ও ओके, कर लेते हैं। ओ वाओ, ये कब हुआ? Hey there, Catherine. Hey there. Good day, you two. It's nice to see you here at this festive time. So, got any jobs for us? I'm afraid I'd struggle to find you any commissions in the near future. With the arrival of the Windbloom Festival, the only task most Mondstadters are busy with is preparing gifts for their loved ones, but it's customary to do this oneself without assistance. Think of this period as the off-season for the Mondstadt branch of the Adventurers Guild. Spring is here, love is in the air, and everyone wants to relax and enjoy themselves. Even the cats at the tavern next door have been getting lovey-dovey with one another recently.
Ew. Gross. You know that feeling you get when you burst out the doors after a nice nap, hoping to make it to the store before the limited edition drinks sell out, only to get there just in time to see the last 2 glasses snatched away right from under your nose by a couple of pesky lovebirds? That's what this feels like. Perhaps you two could simply take this chance to... Traveler, Paimon, thank goodness I found you. There's something I need your help with. Whoa! Sucrose? Go ahead, Sucrose. We don't have anything else to do right now anyway. Phew. Okay. Here's the situation. I've been appointed as the Windbloom Festival's special ambassador by the Knights of Favonius this year. My task is to do good deeds for people during this festival of gratitude and love. Nice one! So how did they decide who to appoint anyway? They spun an empty bottle donated by Angel's Share inside a circle with all our names on it. Whoever's name the bottle stopped at got chosen. I think so too. But everyone said that it was to make it fair, so everyone had an equal chance to become the special ambassador. The thing is, I'm not great at dealing with people, so I was really daunted by it at first. But I'm still glad that I got this role. Luckily, I came up with a way to spur myself on, which has helped. Have a look. Is that a test tube? Yep, every time I do a good deed for someone, I get them to breathe into a test tube. That way, I can collect everyone's breaths of joy. Sounds fascinating. Are you gonna use them in your research? Yes. I believe these breaths of joy will serve as valuable raw materials for alchemical transmutation. With any luck, I'll be able to produce something truly miraculous. Darn, now Paimon's hungry. Wait, you're doing this on purpose, aren't you? Actually, I meant something even more exciting than that. I can't say for sure until I have more test results to confirm my hypothesis, though. Alchemists mustn't make claims they can't live up to. Anyway, I'm still missing one final breath of joy. Oh, is that all you need help with? That's easy. Just treat Paimon to a sweet madame. Then you'll get your last breath of joy. Hey, come on! Paimon's doing her best to help, okay? So, does it need to be more like official or ceremonious or something? No, joy isn't measured in those terms at all. Let me put it this way. Have you ever planted a fruit seed and cared for it while it grows? In the same way that those tender, sweet fruits are the product of your time and effort, the amount of joy derived from an experience is positively correlated to the degree of hardship overcome during it. For example, in my case, I would say that to experience a statistically significant amount of joy, I'd have to do something like spend 6 months developing a medicine formula to a point where it was finally consistently effective. Similarly, in order to collect a significant amount of joy from other people, I have to find ways to do something sufficiently challenging on their behalf. Oh, Paimon gets it now. Long story short, you want us to help you find people for you to help. Oh, that's pretty tough given that it's the Windbloom Festival and all. Oh, I figured since you're such experienced travelers, you might have some ideas. But if even you don't know how to approach this... Really? You have a plan? Well, if she's in, then Paimon will help too. With the talking, anyway. But, if things don't work out, can Paimon still get that sweet madame? Oh, come on, Traveler. This is a festival of gratitude and love, after all. How could you refuse?
Excuse me, Sucrose? Could I borrow you for a second? Package for you. Oh, sure. Be right back. Wait! Is that who Paimon thinks it is? That's Kale, right? When did she arrive in Mondstadt? Let's go say hi! Kale! Hey! Oh, hey you guys. What are the chances? You were staring into space just now. Something the matter? No, don't worry. I'm fine. I was just looking at a Mondstadt children's book in the souvenir shop over there. While I was flipping through it, a piece of paper fell out. The writing on it was really mysterious. Almost like a prophecy. If you can do these things, you may light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. And what does these things refer to? Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. Find one who would never lie. Find a legend that never ends. So, 4 things in total. Here, have a look. I asked a lady who owns the store about it, but she said that she didn't know anything about any paper slips. Hi there. Sorry to butt in, but what's the name of that storybook you just mentioned? Oh, it was called The Boar Princess. That is strange. I've read that book, and it sounds like that note you found has no relation to the story at all. Do you know her? Let Paimon do the honors. Kale, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. And Sucrose, meet Kale. She's a trainee forest ranger from Sumeru's Avidia Forest. Hello. Hi. This is getting awkward fast. They're both so shy. So, Sucrose, what are your thoughts on this prophecy? Could it be real? Without having done any research, I couldn't comment definitively. But if you want my subjective opinion, I don't think that it's a nasty prank or anything. The only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or children, of course. I'm sure that whoever put this prophecy there would understand that. Would they really do this just to spread lies and ruin someone's innocence? I can't imagine anyone being so cruel. That's a great take! I love it! Exactly! Who would want to hurt a child's feelings? Okay, so what do you think the blessing is, Sucrose? If I had to guess, maybe a fairy that can make people's wishes come true or something? I haven't read many fairy tales, so this is pure speculation. With no other information on hand or prior research to compare against, I'm afraid it might not even be worth considering. Wow! Her guesswork is really good, though. I want to pick her brain some more. But will she find it annoying if I keep asking her questions? We've only
only just met after all. What's the best thing to say to someone you're meeting for the first time? Well, yes. I mean, if possible. Then, what would you wish for, Kale? I'd wish for a better personality. Uh-huh. Huh? You can't waste it on that. You've got a great personality already. That's very kind of you. But if you know me like I do... Kale! I know that voice! It's... Kale! Whew. You made good time, huh? You're way earlier than I expected. I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes are sharp, or I'd have missed you. Amber! Have you been doing well? Did you finish all the pita pockets I brought you last time? You bet! They're getting yummier each time you make them. Huh? Wait, remind Paimon, have you been to Mondstadt before? A long time ago, I had a lot of help from a lot of people here in Mondstadt. So ever since my Elazar got better, I've been looking out for an opportunity to come back to Mondstadt and tell them all the news that I've been cured. Thanks. If it's okay with everyone, why don't I take Kale for a walk around town? I'd like to show her some of the places she didn't get to see last time. Of course. Fine by me. Sure, go right ahead. Sorry, Amber. I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, so I can't go with you just yet. Oh, that's all right. In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master Jean to ask for some time off. Oh, okay. Traveler Sucrose, could you look after Kale for now? I'll come get her later and take her out. There's still a whole bunch of people I need to introduce her to. Sure, no problem. Awesome. See you later then. You all right there, Kale? You look kinda disappointed. I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't worry about me. Amber wants to introduce me to more of her friends. Am I gonna be able to cope? I've only met Sucrose so far, and I'm already struggling to make conversation. I wish I had a little more self-confidence. Then I'd find it much easier to make friends with people. It's nearly time! Let's go to the gate and see if they've arrived. ये क्वेस्ट काफी नाइस है. वाव. कितना सुंदर सजावट है. Welcome to Mondstadt. Hope you enjoy the Windbloom Festival. Oh. Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true Great Vayu Viastra.
Oh, come on. Don't tell me you don't get it. View, Vayu, and also Mahamatra, Vayu Vyastra? No? Kainari! Sino! Over here! Whew, am I glad to see you. And who's this young lady? Master, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. We just met. Sucrose, this is my teacher Tainari. He's a highly respected forest watcher in Sumeru, and he's also a very famous botanist. Kale's exaggerating. I'm Tainari. Pleased to meet you. So you have a teacher as well. The pleasure is all mine, Tainari, sir. Yep, he's extremely knowledgeable too. And this is General Mahamatra Sino of the Sumeru Academia. He's really famous in Sumeru as well. Greetings. Though if I might say so, we're purely here for personal reasons. You needn't be unduly concerned with our official positions. And Kale, there's no need to use my full title. Sino is fine. Or sir, if you absolutely must. Indeed. We're not here in an official capacity, just to keep Kale company on her vacation. Keep me company? But it was you two that insisted on coming. Kale is very important to us. We felt obliged to ensure her safety on the long, treacherous journey to Mondstadt. But I've been here on my own loads of times before. What about your work, though? What if something bad happens while the General Mahamatra's away? There should be no issues. I have left my duties in the hands of my subordinates, and two especially reliable helpers. Oh, Sucrose. What were you saying about you having a teacher as well? I was just going to mention that I think we're in a somewhat similar situation. I'm an assistant to Mr. Albedo, Mondstadt's genius alchemist. Oh, please, Sucrose. Genius is an unnecessary epithet. It will serve only to leave an exaggerated impression of me in the minds of our guests. Mr. Albedo, but it is an objective truth. Hey, Albedo's here too! Great! The more the merrier! That's so nice. Oh my god. So tell me, Sucrose, since your specialty is bioalchemy, what do you know about the antitoxic properties of the calla lily? Wait! Can we hold off on the nerdy topic for now? Paimon doesn't want to be left out. Oh, as it happens, I've studied the calla lily in quite some detail before, with it being a species native to Mondstadt. I wrote a whole report on my findings. If you're interested, Mr. Tainari, sir, I can go get it for you. We're supposed to be here on vacation, and you're already thinking about how to improve your herbal medicines? Also, I thought we'd agreed to take on new identities for this trip. What new identities? Mine was Adventurer Sino, skilled desert explorer. Tainari's was technological consultant to the treasure hoarders, and Kale's was traveling musician. Very much so. I do wish some of the less cautious adventurers in the Avidya forest would consider coming to Mondstadt instead. What Philanimo mushrooms lack in texture, they make up for in not causing vomiting or diarrhea. Are you contemplating using some compounds from the calla lily as active ingredients in a targeted antidote? Yes, I gathered a few on the way here, and my initial research suggests to me that it could be worth a try. Okay, I got it. But as much as I don't wish to be a wet blanket, it takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Estimating the total development time would be very difficult. Add in the time for procurement and delivery of essential materials, and I'm not sure if we could complete development before you need to return. Then please, allow me to help. Mr. Albedo,
Apologies for my tardy entrance in the present discussion. I understand you're looking to make an antidote for poisonous fungi, correct? If you happen to have some samples with you, or relevant documentation on hand, perhaps you might give me the chance to review them later. But before that, I invite the three of you to look at this. Food and lodging arrangements? Were you quietly writing this up the whole time? Paimon didn't even notice! Hardly. Rather, I should apologize for interrupting a serious discussion between trained professionals, especially after they've traveled so far to be here, when I myself am neither an adventurer, nor a technological consultant, nor a musician. Nevertheless, I would encourage you to have a knowledgeable local arrange your detailed itinerary while you're in Mondstadt. Take a look, and should you find anything here to be objectionable, it can easily be adjusted. This is too kind of you. These arrangements are quite excellent. It looks great! Even Paimon feels like tagging along for the food and board. Wait! Doesn't Paimon's opinion matter anymore? Paimon's technically a guest in Mondstadt too, you know! Very comprehensive. The adventurer, technological consultant, and musician all approve. Thank you. Just one thing. We'd like the chance to cook as well. Why don't we change the group dinner to a camping and cooking trip? I'll help pitch the tents. I can help too. And Paimon will take her to Good Hunter to order some starters. Mondstadt's cold-cut platter is not to be missed. Great, then it's decided. Sucrose and I will bring the three of you to your inn for a quick rest. You two, let's meet by the lake this evening. That's so nice. So odd, but so nice. My experiment will succeed. There's still a long road ahead. There's still a long road ahead. Sure, coming right up. Would you like anything else? Do we, want anything else? Yay! So you do remember after all! You're just the best! Paimon will give you the sweet flower from that sweet madame as a wind bloom. No need to worry about that! Paimon can make room for good food. All right, just a moment. That was great. If that was a Windbloom treat, then Paimon wishes it could be the Windbloom Festival every day.
looks like we're all here. Not at all. We just came early to set everything up, since we happen to be free today. Kali put up the tent so quickly, but still managed to tie very sturdy knots. You can really tell that she's a professional. I didn't do much apart from passing materials around. Thanks. It's all thanks to Master and Sino. They taught me everything I know. What can I say? For a skilled adventurer, this is just another day on the job. Are you quite finished? Or were you going to sing each other's praises till the moon rises? Come on, let's all sit down. That sunshine sprat was really very good. I didn't watch you cook it, but I believe that the prominent umami flavor of the dish owes itself to more than the fish alone. That's correct. Any further deductions? Let me think. The aroma was quite uniform. Unlike that of a spice blend, it was also unfamiliar to me. So I would venture that it was a Mondstadt specialty. As far as edible Mondstadt plant species are concerned, calla lilies are usually used in soups. So if I had to guess... small lampgrass? That's right. I've long heard that Sumeru's fish with cream sauce is noted for its gentle texture, which brings out the tenderness of the fish. Here in Mondstadt, we're not quite as varied in the use of spices as in Sumeru, but the principle of bringing certain distinct flavors to the forefront through combinations of natural ingredients is very much the same. I liked it a lot. I'm curious as to the exact ratio of ingredients. I'll write a copy of the recipe for you. Would anyone like to try the nutrient-dense meal I made? I'll have some. What about you, Kale? It doesn't look like you've eaten very much. Is your appetite low at the moment? No. I just don't eat a lot normally. Sorry. I didn't mean to make things awkward. Tainari, while we were on the road, we spotted something white, walking on two legs. Was that Paimon? Which day was this? Just after passing through Stonegate. Sino, are you sure your eyes were working that day? Or maybe your hood was blocking your vision? Paimon always flies. There's no way she'd ever walk. Is that right? I thought that you'd made me snacked on too many local ground nuts. No? Not funny? Ground, you know, as in ground up, but also the ground. Ground nuts make you fall to the ground. Think of this as part of the process of getting to know Sino. On the bright side, these jokes show that he thinks of you as his friends. Still, we could test the hypothesis. What hypothesis? The hell? That plant species indigenous to Mondstadt may have an effect on the motor functions of flying lifeforms. Hey! Paimon's not your test subject! Anyway, by your logic, wouldn't that mean that eating, say, Zaitun peaches, that would make a sick Paimon peachy in no time or something? Hey! Not you two! I think the Traveler and Paimon's conversations are more entertaining than Sino's jokes. I see. You must have been keeping quiet about this grievance for quite some time now. You seem much cheerier now that you're here in Mondstadt, Sino. Actually, feels like you're a completely different person. That's because I'm Sino the Adventurer. It's not?
No. In fairness, you only saw him in his work mode while you were in Sumeru. He's actually like this most of the time when he's in a good mood. Yep, it's true. Sometimes when he's eating, he'll grumble about how the bowl is too shallow for the amount of food it contains and other random stuff like that. I understand. Then allow me to reintroduce myself. Before, you knew me as General Mahamatra Sino. Now, please see me as Sino the Adventurer. Yeah, so that's another thing he does. He'll keep repeating something he thinks is funny until you stop trying to resist. So you have two different mental states? Almost like different phases of matter. Interesting. I want to learn to do that too. I think in your case, the two states we would end up with would be highly conscientious sucrose and stupefied sucrose. Oh, by the way, was there any reason in particular that you chose Mondstadt as your destination on this occasion? Oh, well, Lisa once told me that the Windbloom Festival is one of Mondstadt's biggest events of the year. I wanted to take this opportunity to give everyone a Windbloom, as a token of my heartfelt gratitude for everything they've done to look after me. Plus, it was a good chance for Kale to get out and meet some new people. Kale Lily. What? Kale's Windbloom. Maybe she should call it a Kale Lily. It sounds very Mondstadt. There's also Cauliflower, which would technically make more sense. But somehow, it doesn't sound as nice. Moving swiftly on. Wow, he just completely ignored the joke and carried on the conversation. Guess sometimes that's the only way forward. Sumeru's been through some major changes recently, and things at work have only just started to calm down. I don't get many opportunities to take a vacation, and this was a chance to join Kale on her trip while also learning a few things about Mondstadt's flora and fauna that I'll be able to pass on to my peers and students on my return. Two birds with one stone. How about you, Sino? I came to ensure Kale's safety. That's just an excuse. Plain and simple. Also, there's the matter of a Genius Invocation TCG custom-made card back. Aha! So you did have an ulterior motive. Have you all played Genius Invocation TCG before? And that is why I am proud to call you my friend. When I first began contemplating getting a new card back, I asked around before eventually deciding to ask the legendary Mr. Calx for guidance. A friend of mine, Sawada, whom I played cards with on occasion, had been to Inazuma for the Irodori Festival. He told me that Calx was a Mondstadter, so I should try my luck there. Calx? Isn't that... You mean, he's a friend of yours? I see. So, you came to Mondstadt in search of Calx. No, that is inaccurate. I came here principally to protect Kale. You most certainly did not. Kale's been here on the quiet numerous times, and this is the first time you felt the need to join. Not only me, same applies to you too, doesn't it? If my writer friend were here now, I'm sure he would describe this curious coincidence as having the makings of a good story. It's always a pleasure to meet a fan. Oh, here he comes. Wait, you mean you're Mr. Calx? Having my new friends address me by my pen name feels somewhat unusual. Please, just call me Albedo. Huh. So you're Calx. Sino's been talking about you non-stop recently. He's intent on getting you to design a bespoke card back for him. You didn't have to say all that. I don't usually take private commissions, but I believe that we are friends now, all of us. Our conversations have been deep and interesting, and Sino, your passion for this game is indeed one of a kind. I can see it in your eyes.
Obviously. And given that you've come all this way from Sumeru to see me, I'd be quite honored to take this commission. Wow, your teacher's so nice. I feel the same about yours. Well, they definitely have different personalities, but they're similar when it comes to their character. So, how much should I budget for the timeless masterpiece you will produce for me? Surely, timeless masterpiece is something of an overstatement. Any artwork fit to appear on the reverse of my card decks is by definition a timeless masterpiece, even if I do say so myself. Don't mind him. These TCG nut jobs are all like this. I see. So, this has an almost religious significance. Well, for starters, I'd like to hear a few more of your jokes. My jokes? You like them? I do. What the hell? Really? I didn't see you laughing. Yeah, well, the joke's ability to induce laughter is a separate matter, but I certainly find them fun. If I might interrupt, does anyone else smell something strange? My nutritional meal! Will it be okay? Should we go over and take a look too? So, a good joke is not necessarily required to make people laugh at them. I'd be grateful if you could check on Sucrose. As for our new friends here, leave them to me. Well, Albedo and Sucrose were delightful, but this was still an exhausting meal. Only the base is burned. We can still use the cooking pot. It just needs a bit of a wash. Good thing Tainari's nose is so sharp. Has he been in this kind of situation a lot before? I know, it's just... I'm sorry to disappoint Sino. I guess we'll have to do this again another day. Oh, yes. I'm not sure if you've noticed. Kali seems a little... depressed. I noticed she was in a low mood when everyone was talking. Remember that note she received? I was just thinking. I want to try solving this riddle and giving Kali the chance to accept the blessing. Oh, yeah! She's someone who needs your help. Exactly. Maybe she'll be willing to breathe into my test tube. But anyway, that can wait. As much as I'd like to make progress in my research, I'd prefer to see her smile. All right, we'll help out too. You will? Then tell me, honestly, do you think that this prophecy is for real too? Right! Alright, let's meet at the alchemy crafting bench in the city. I've got some thinking to do in the meantime. We're back. Oh, what a shame. You just missed a joke about windmills. Stop, please. I don't need to hear it a fifth time. That bad, huh? Well, now Paimon really wants to hear it for some reason. Didn't you say you want to see the Dragon of the East at some point? When are you going? Tomorrow morning. And you? What are your plans? I'll go into the mountains to have a stroll and collect a few plants as samples. Oh, perhaps I could join you? I'll be looking for inspiration for these card back illustrations. Found you! I knew I was onto something as soon as I saw the fire. Wow, you have really sharp eyes. That's an outrider for you. Uh-oh. Did we break the fire safety rules or something?
Actually, you didn't. Strictly speaking, you should have reported your plans first. But since two of our very own alchemists are here, I'm happy to look the other way. Ah, yes, introductions. I'm Amber, and this is the Reconnaissance Company Captain Eula, a good friend of mine. Good evening. You are friends of Kale, yes? A pleasure to meet you. Oh, Amber and Eula. The pleasure is ours. I've heard a lot about both of you from Kale. Oh, really? All positive, I hope. You asked that last time, too! Of course it was positive! I'd say. We hear the latest news about you every time you write to Kale. Glad to know we've made a good impression so far. Anyway, we're just here to collect Kale, so don't let us interrupt your chat. Come on, Kale. We're gonna take you to check out a few scenic spots. Okay, great! Still as high energy as always. You know Amber? Yes, we've met. She's Kale's most important friend. And for that, we are also very grateful to her. That's Amber for you. Her outgoing personality means she can make friends with just about anybody. It's getting late, and we still have a lot lined up tomorrow. I suggest we all head back and get some rest. All right, I'll start packing up. You're gonna get the tone-deaf bard to check out that note, aren't you? Guess Paimon knows you pretty well, huh? Knowing him, he should be hitting the taverns around this time. We can go corner him and make him answer our questions. Let's move! Let's go. So far, so good. It's quite enjoyable. Oh, it's been a while. Paimon called it, tone-deaf bard drinking as usual. Put your drink down and get your game face on. We've got some important questions for you, mister. Okay. So, what do you make of it? Aren't you forgetting something? It's the Windbloom Festival right now. You can't just go around asking people for help so blatantly. Well, if you won't tell us the answer, could you at least tell us if this thing's worth a shot? Sounds to me like you want a hint or two. A fine answer. The person who wrote this prophecy is very powerful. If you manage to solve the riddle, good things are sure to happen. Also, I happen to know where this lantern is. Once you've found the 4 things, I'll even write the location down for you. Isn't that generous of me? Whatever. We weren't expecting much from you anyway. You can get back to guzzling wine and blowing wind now. Oh, woe is me. Paimon sees me as nothing more than a drunken wastrel. There are actually a great many things that we bards are required to do. It just happens that enjoying life is the most important one. Once this is over, would you like to join me for a drink? You know, a favor for a favor. Or, given the way that you're staring at me, perhaps you'd like to get me that drink now? I, of course, would be most amenable to that. But I believe you have friends waiting for you. Don't worry, there'll be plenty of time during the festival.
flower that is not of this world. Not of this world. Sucrose! We've got some good news and some bad news. Which would you like to hear first? Let's have the bad news first, I guess. Huh? Really? Don't most people usually want to hear the good stuff first? Oh, alright then. Basically, we went to Windrise to divine the breeze. The wind said that the prophecy is real and that your idea is a really good one. That doesn't sound like bad news. So what's the real bad news then? Paimon ate the bad news! Please, Sino! If it's not funny, then it's his fault! It's fine. Well, that puts my mind at rest. Now, back to the other issue I've been mulling over. I was thinking about the flower that is not of this world. It could mean a human-cultivated variety that doesn't occur in nature. But that's basically claiming that it doesn't come from this world in the first place, when actually it's just a variant of an existing breed. So, the initial question is, can the flower's origins be traced back to a natural organism? If so, it cannot be correctly described as not of this world. But then, supposing we identified something outside of that category, whose job would it be to decide whether it belongs in this world or not? Then the question becomes, do of this world and from this world mean the same thing? Or is it deeper than that? Whoa, whoa, slow down! Paimon's head is already starting to spin! Okay, I did have one other line of thought as well. What about a flower created using alchemy? Would that be not of this world? Albedo may know the answer, but asking him right away would be like asking the teacher for the answers to your exam paper. It would render our search for the truth meaningless. I'd rather try and figure this out for myself. Could it be the Windbloom? Oh, now that you mention it, that's definitely a possibility. The Windbloom doesn't refer to a specific flower. Everyone defines what it means for themselves. In which case, the Windbloom doesn't exist in reality. This does seem like a promising direction. I've made a note. Okay, I better go read up on this. Yay! Paimon was actually useful this time! Guess we had that sweet dance today, huh? I'll need some time to prepare. Could we meet up here in, say, 2 days' time? Sure thing! In the meantime, we'll also think about the other 3 riddles in the prophecy. But, since we're really going for this now, shouldn't we say something to Kali about it? I originally wanted to leave it as a surprise for her. And I also didn't want to get her hopes up over nothing. But you're right, Paimon. I'll need to be careful how I word it. But I'll try to find some time over the next couple days to mention it to her. Alright, thanks so much.
भाई लिटरली पियानो बजाना पड़ रहा है इधर. What the hell?
जिसको पियानो बजाना आता है ना वो इजीली ये कर पाएगा. I don't think it's enough. Yep, it's not enough. ओ भाई ये हाथ खराब हुआ.
मजेदार था ये फुल म्यूजिक एक्सपीरियंस मजा आ गया इसको बाहर भी करेंगे ओह मैं ये सब ले सकती हूँ ओके ओके मैं ये ले सकती हूँ क्राउन ऑफ इनसाइट ओके ओके ठीक है अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय बाय गुड नाइट किस लिए आई डोंट नो बाय बाय